इट इज़ ऑलरेडी प्रिटी हॉट इन दिल्ली एंड क्योंकि गर्मी इतनी है, बहुत ज़्यादा बेस अप्लाई करना है, अब हैवी मेकअप अप्लाई करना है, प्रैक्टिकली सेंस नहीं बनाता है। एंड दैट इज़ द रीज़न व्हेनेवर आई गो आउट टू पिक माई डॉटर और रन सम एरंड्स, मैं बहुत लाइट मेकअप करती हूँ। बट देयर इज़ वन थिंग जो मैं हमेशा अप्लाई करती हूँ एंड दैट इज़ द ब्लश। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एज आई सेड, मैं कभी भी अपना ब्लश स्किप नहीं करती हूँ while going out because that is something that makes me feel a little put together. मैं बेस अप्लाई ना भी करूँ but a little bit of काजल, blush and lipstick makes me feel put together. लगता है कि मैंने efforts किए हैं and मैं तैयार होके आई हूँ. So today while I was getting ready to go out, I wanted to try something new for my blush. And while searching for the blushes that I have in my collection, I came across this beautiful looking crystal blush जो कि मैंने कुछ महीने पहले मीशो से परचेज किया था। नाउ अगेन कुछ महीने हो गए हैं इस प्रोडक्ट को परचेज किए हुए एंड इफ आई रिमेम्बर राइट, at that point of time ये जो particular blush था, the crystal blush was very famous on the social media and that is why I wanted to try it. Just look at the blush, it is completely clear. It is called crystal blush. मैंने ये assume किया था कि इसको crystal blush इसलिए बोलते हैं because it does have little glitter particles in it, but this is completely clear. It is like a crystal clear blush and I am pretty sure you won't be able to see any product right now and आप directly background को देख पा रहे होंगे and that is not the case. The packaging does have a lot of product. Actually मैंने product अभी open किया है. So today while I'm getting ready, I would be applying this blush and this would be a first impression video. Now talking about the blush, there is not a lot of things that are written on the packaging except for the fact that it is a crystal blush. Let me check the outer box of this blush. Okay, so I apparently do have the outer box of the blush and again it just says it's a crystal blush. The list of ingredients is actually not very promising. It is like a very affordable blush. I just paid around 112 rupees for this blush. So बहुत ज़्यादा fancy ingredients तो मैं expect नहीं कर रही थी इस blush से. But yes, it is a very good looking blush. देखने में बहुत ही सुंदर, बहुत ही fancy सा है. So I am getting a little bit late, so let's try this blush on and see कि ये exactly कैसा दिखता है on the face. I have tried swatching this blush with my fingers and although fingers पे तो ये blush थोड़ा pigmented लगता है but while I was swatching it on my hands तो बहुत ज़्यादा color पे off नहीं आया था. So I'm not too sure कि ये actually मेरे cheeks पे visible होगा या नहीं होगा, specifically because of the fact that I am not wearing a foundation. So let's give it a try and see ये 112 rupees का blush कैसा perform करता है. Now since इस blush में कोई mirror नहीं है, I'll just quickly take my K Beauty का जो highlighter palette है for the mirror and then apply this blush. I would be using my fingers to apply the blush because that is what I think would make it work in a good manner. I am not too sure, so I'll just swirl my finger in this. It is very soft, like बहुत ही soft, and can you see the color? I can see a little bit of color on my fingers, so it is very soft and very creamy to feel. ऐसा लगता है जैसे जेली को हाथ लगा रहे हैं. So now I have a little bit of pigment on my fingers. I'll just apply it here. Okay. Yes, the color is pigmented. A little bit of blush is visible on my cheeks. I hope you'll be able to see the color pay off right here. I am a blush person और मुझे काफ़ी like loud flush of color पसंद है. So this is not something that I would go for in just one single swirl. So I'll apply a little bit more. And yes, the color does give a decent payoff. I hope you'll be able to see the flush of color on my cheeks. अगर flush of color नहीं भी दिख रहा होगा, so I think यहाँ पे आपको थोड़ा सा highlighting सा दिख रहा होगा because the glitter particles that are visible in the blush are not actually visible on the cheeks. लेकिन एक glitter, एक sparkle, highlighting sort of glow cheeks पे definitely ये blush दे रहा है. So I'll quickly apply it on the other side as well. Now I'm not too sure कि ये brush के साथ कैसा apply करता है, but as far as I'm applying it with my finger, it is very easy to apply. बहुत आसान है इसे blend करना. बहुत अच्छे से blend हो रहा है skin में and it is giving a good flush of blush on my cheeks.
Okay, so I have applied the color on both of the sides. It might not be very visible in the camera right now, but if I am looking in the mirror, I can see a beautiful light flush of pink on my cheeks. And although I wanted to apply a neutral shade of lipstick, but क्योंकि अब मेरा blush pink हो गया है, so I'll just quickly apply a light pinky lipstick. Then हम बात करेंगे how I exactly feel about this viral crystal blush. So let me apply the lipstick. By the way, the color that I am applying is by K Beauty. This is K Beauty's Hydra Creme lipstick in the shade Verve, and this is one of my most used lipsticks. I use it so often कि मैं already like half of the lipstick use कर चुकी हूँ. But yes, I absolutely love how the color looks on me. That being said, let's talk about the crystal blush. That is the topic of the video. So overall price wise अगर देखो 112 rupees का blush है, which is pretty affordable. But 112 rupees में do not expect good ingredients. So ट्रायल के लिए, मे बी वीडियोज के लिए, या यू नो जस्ट टॉकिंग अबाउट इट और जस्ट द फैंसीनेस ऑफ इट, this blush is fine, but I would not recommend this particular blush for a longer period of time क्योंकि इसके ingredients जो हैं are not very skin friendly, I would say. As far as the look is concerned, the way this blushes look, it looks very beautiful and vanity में लगा हुआ है ये pinky packaging and crystal clear brush काफी सुंदर लगेगा. As far as the fact कि क्या ये blush actually काम करता है, yes it does work. बहुत हाईली पिगमेंटेड नहीं है, लेकिन अगर आप एक लाइट फ्लश ऑफ कलर चाहते हैं अपनी चीक्स पे, देयर इज पर्टिकुलर ब्लश डज गिव अ ब्यूटीफुल ग्लो टू द चीक्स. एंड यस, लाइट मेकअप के लिए, और मे बी इफ यू आर यूजिंग इट विदाउट एनी मेकअप, देन दिस पर्टिकुलर ब्लश डज वर्क. ओवरऑल 112 रुपीज के लिए द पिगमेंटेशन, द फॉर्मूला इज एब्सोल्युटली वर्थ द मनी. बट अगेन द लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स इज नॉट वेरी अपीलिंग. सो पर्सनली मैं इस ब्लश को बहुत ज़्यादा यूज नहीं करूंगी. मे बी a couple of times in a month and not more than that. So yes, that is what I feel about this crystal blush from Meesho. If you are interested in buying this particular blush, आप इस particular blush को Meesho से खरीद सकते हैं, और इस टाइप के कुछ similar blushes Amazon या Flipkart पे भी available है. I will link all of them in the description box. So if you're interested in trying a similar sort of blush, तो मैं उससे description box में link कर दूंगी. So आज की वीडियो के लिए बस इतना ही. उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा. अगर आप ऐसे ही और अफोर्डेबल मेकअप प्रोडक्ट के रिव्यूज मेरे चैनल पे देखना चाहते हैं, then do let me know in the comment section down below कौन सा पर्टिकुलर मेकअप प्रोडक्ट है जो मुझे नेक्स्ट ट्राई करना चाहिए. सो दैट बीइंग सेड, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो. नमस्ते.